अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। हाले से वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है आई एक्सपीरियंस्ड रॉयल्टी एट 100 years ओल्ड गोंडल प्लेसेस इन गुजरात। देखते हैं आज की वीडियो में। I am at one of the best and oldest palaces of Gujarat to get a whiff of the royal life. Welcome to Heritage Gondal Palaces. राजकोट एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर गोंडल इज अ क्विंट लिटिल टाउन ऑफ गुजरात। ज्यादातर गुजरात आने वाले टूरिस्ट को शायद इस जगह के बारे में ज्यादा पता ना होगा, बट वंस दे सेट फुट इन दिस चार्मिंग टाउन, उन्हें गोंडाल के पैलेसेस से प्यार हो जाएगा। Founded in 1634 by Jadeja Rajput, Gondal princely state was modernized by His Highness Maharaja Sir Bhagwant Singh Ji from 1880s to 1940s. ये गोंडल के सबसे loved and respected महाराजा हैं। इनके राज में इन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग की वजह से कई सारे डेवलपमेंट्स लाए थे, बी इट टैक्स रिफॉर्म्स और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर वुमेन। The royal family who still live in this town have 3 major and magnificent palaces in Gondal. The Orchard Palace, the Riverside Palace and the Naulakha Palace. अब Orchard Palace और Riverside Palace तो convert हो चुके हैं into heritage hotels, whereas the Naulakha Palace has been converted into a museum. मैं रह रही हूँ at Orchard Palace जो built हुआ था in the 19th century. This was built actually to host the special guest of Maharaja. And guess who's the special guest this time around? Well, so the Orchard Palace has only 7 rooms to offer. काफ़ी spread out है. It literally feels like you are living in someone's home. Of course, it is a palace and all the rooms here are well appointed by 1930s, 40 art deco. It's got handicrafts, it's got antique furniture. Each room in fact has a different structure, different kind of a furniture. Let me show you a very special room जो महाराजा ने अपने special guest के लिए रखा था. The property gets its name from the lime, chiku and mango groves it faces to the rear. More than 80 peacocks and peahens inhabit the gardens and a variety of other birds can be watched while walking around the grounds. Well, one of the most interesting parts of the palace is the rail salon of the royal family. You know, the interesting bit is कि महाराजा को travel का शौक था हमारी तरह, but wherever he would travel, he would attach his private rail carriage to the train journey that he wanted to join. Now I'm quite intrigued to know कि ऐसी क्या खास बात है इस rail carriage की. Let's go and find out. Oh my God, this is so cute. Wow, so this is the rail saloon. You know, it actually comes with a cute drawing room. It's got a dining room. It also has a very cozy bedroom. It's got bathrooms. It's got English vintage style furniture. I think, you know, few experiences money can't buy, and this is definitely one of them. Well, the royalty doesn't end here, as the royal family of Gondal has one of the largest collections of vintage cars. They have over 38 vintage, gorgeous looking cars, even from the pre-1910 era. Come, let me show you around. The Royal Vintage and Classic Car Collection includes family's excellent collection of cars from a pre-1910 new engine to the European vintage cars, American cars or even sports cars.
Well, the royal family has been big time into racing, and no wonder then they have a great collection of sports cars too. You can spend a night in the Orchard Palace for just 5,775 rupees plus taxes for two. A stay at a royal palace definitely deserves a royal meal as well. तो मेरे सामने है एक authentic Gujarati थाली, a royal थाली so to say. It's got tilli wale aloo, crunchy bhindi, रजवाड़ी ढोकली, दाल and गाजर का हलवा along with बाजरे की रोटी and आटे की रोटी. Can't wait to dig in. Hey, by the way, there's also a bowl full of ghee and gur, and I think without these two elements, a Gujarati thali is often incomplete. Well, that was quite a tour of the Orchard Palace, but now it's time to explore the Riverside Palace, which is just about a kilometer away from here. Well, so this is the Riverside Palace, which is a European-style mansion built in the year 1885. महाराजा ने ये अपने प्रिंस और प्रिंसेसेस के लिए बनाया था. From the looks of it, well, I totally love the color of this palace. Now, that's a pretty dining room and lots of animals staring at the dining table. So guys, what you see here are not sculptures or carvings. They are real animals preserved using a very specific technique, and all these animals were hunted by the royal family a long time ago, and they've now been installed on the walls of this palace. रिवरसाइड पैलेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है नियर द टाउन्स रिवर. यहाँ हर गैलरी में आपको हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स, प्रिंट्स एंड एंटीक बीड वर्क देखने को मिलेंगे. Well, so the Riverside Palace has about 11 rooms, all of them extremely spacious, high ceilings, and they all come with elegant colonial furniture. And not just that, rooftop पर glass walls है, which lets the sun shine into the gallery, and it looks really beautiful. So this is the 9 Lakha Palace, जो built हुआ था in 15th century. बाकी दो पैलेसेस से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में. इसे 9 लखा एक बहुत ही खास रीज़न से बुलाया जाता है. कई साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 450 ईयर्स अगो, जब ये बिल्ट हुआ था, इसे बनने में लगे थे 9 लाख रुपए. एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 9 लखा पैलेस. वाओ, दिस इज सो गॉर्जियस. ये गोंडाल का सबसे पुराना पैलेस है. इनफैक्ट कई साल पहले द रॉयल फैमिली ऑफ गोंडाल यूज्ड टू लिव हियर. महाराजा भगवत सिंह जी के टाइम पर दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड द फैमिली शिफ्टेड टू हुजूर पैलेस, जहां वो अब भी रहते हैं. एंड द 9 लखा पैलेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम. So this is really cute. This is the Maharaja's room when he was a kid. काफी cute सी nursery है यहाँ पर, and it really baffles me as to how they have managed to restore and preserve every little thing in this room and in fact in this palace.
यहाँ के प्राइवेट म्यूजियम में टेक्सटाइल्स, ब्रासवेयर, रॉयल वार्डरोब सब है and even a weighing scale on which Maharaja was once measured by locals against gold on his golden jubilee as a tribute to him. वैसे I have to say रॉयल फैमिली काफ़ी शौकीन है. We already saw their collection of vintage cars and here I can see a huge collection of horse carriages which are more than 100 years old. So many interesting stories. वैसे anyone can come to 9 लखा पैलेस. यहाँ आने की टिकट है 320 रुपये. बट अगर आप रह रहे हैं at ऑर्चर्ड पैलेस और रिवरसाइड पैलेस like me, you get free access to the entire museum and a visit around the 9 लखा पैलेस. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था that Gujarat has so much grandeur and royalty to offer. I'm sure you too are tempted to plan your next trip to the palaces of Gondal to experience the same royalty as I did. पर मेरा सफर गुजरात में यहाँ खत्म नहीं होता because I am heading next to Surendranagar to find out what that pretty city has to offer. So stay with me as we travel around Gujarat. Until then, it's me Kamya Jani signing off. जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि गोंडल रॉयल, वो फिर 9 लखा पैलेस, 9 लखा पैलेस था, प्रिंसेस हाउस था, उनकी ट्रेन थी, उनके मतलब बागीचे थे, कार्स थी और इनके एंटिक पुराने ज़माने के फर्निश. मतलब कि यार वो महाराजा भी महाराजा हो गए वाकई. रेसिंग का उनको शौक और उन्होंने अपने टाइम पे अवार्ड्स भी जीते और मतलब कि हर एक कलेक्शन करके वो निकल. अच्छा, उन दौरान 9 लाख का 9 लखा वो पैलेस जो बना है तो वो ओल्ड. अच्छा, वो आजकल के दौर में करोड़ों को छू गया होगा. नहीं वो पे कहेंगे हम करोड़ तो क्योंकि करोड़ तो नहीं ना, करोड़ों को, करोड़ों तो अरबों प्लस कर दो. अब अरबों रुपयों में क्योंकि वो उन दौरान का अगर वो पैसा लगाओ 9 लाख और अब का पैसे लगाओ बहुत यानी काउंट कर लेते हैं ना, यानी बहुत ज़्यादा पेमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा. और इसके अलावा जो इनके जो घर के अंदर एंटिक चीज़ें अब तक वैसी की वैसी है. कोई इन्होंने कोई न्यू फर्निश नहीं दिया और कोई न्यू वो नहीं कि इन्होंने कोई लोकेशन दियो या न्यू कलर. देखो चिल्ड्रन रूम देखो, प्ले एरिया वैसे ही है यार. अच्छा, क्या ज़बरदस्त आला एक लुक लगता है. बहुत अच्छा. और ये मुझे तो बहुत पसंद आया कि देखो एक पुराना लुक होता है. आज भी मतलब वो उनकी जो फैमिलीज है बोलते रिहाइश कर रही है, रिहाइश मतलब इसी तरीके अच्छा, से. अच्छा, साफ सफाई माशाल्लाह क्या ये लोगों ने रखी है. इसी से देखो बरकत भी है, इज्जत भी है और इसी से कहते हैं ना अगर ये जहाँ सफाई होगी वहाँ कामयाबी भी है. तो ये चीज़ तुमने देखी, प्राइवेट ट्रेन भी उन्होंने देखो उस टाइम पे कोई इतना कोई ज्यादा ट्रेन. और ये अच्छा, वो ट्रेन के अंदर देखा कितनी सहूलतें. होटल में 5 स्टार होटल यार, मतलब एक अलग ही लुक. आपका वॉशरूम है, आपका अलग किचन है, बेड रखे हुए, एक वॉच रखे हुए, डाइनिंग टेबल. इनके यार में क्या क्या चीज़ों की तारीफ़ें करो, बहुत ज़बरदस्त. अच्छा, मैं ये समझ रही थी वहाँ पे कोई रिहायशी नहीं है, जो इन्होंने चीज़ें बताई लोकेशन, लेकिन जिस तरह इनकी इंडियन थाली आई और कुछ जगहों पे इन्होंने कहा कि इनके फैमिली भी यहाँ रह रही है, ये वो, मैं एकदम हैरान रह गई, शौक कि यानी रिहायशी यहाँ पे रह रहे. बिल्कुल. और इतनी पुरानी चीज़ों में अब तक ये लोग रह रहे. और जब आते जाते होंगे आजकल बच्चे हैं बाहर मुल्क के या अपने ही मुल्क में, तो वो देखते होंगे कि ये न्यू चीज़ें ये आई है, न्यू ये आइटम है, ये सजाने की चीज़ें, कुछ भी लोगों ने न्यू नहीं लिया, सारी एंटिक चीज़ों तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमकर. आपको भी अच्छा लगा होगा इसी तरह. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें और इसी तरीके से मज़े की वीडियोस हम आपके आगे पेश करते रहेंगे. आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.